So now we'll be starting with the new topic that is called as decision theory, which majorly talks about how decisions are being made. Okay, so when we look at decision theory, whatever that we have seen till now, in all those cases, you have your information available or some past data is available based on which you can make certain trend kind of analysis can be done, and hence you can take some calls. But this kind of situation can not always be there. So there could be uncertainty. There could be, you can say, uh, unavailability of data also. तो आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा. So under those circumstances, what do you do? How do you go about decision making? Now, whatever that we are covering here is majorly about quantitative decision making, but at the same time, there is something called as qualitative, or rather, the third aspect I would say is called as your understanding of the market. ओके सो कई बार हम लोग उसको इवन गट फीलिंग बोलते हैं. अभी रियलिस्टिकली देखा जाए तो एआई और वो सब चीजें, एवरीथिंग इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द पास्ट डेटा. ओके, बट मान लो यू आर thinking about launching a product in the market. A similar kind of product has never been there in the market. It's something innovative and a new product. So what will happen in that case? अब आपको मार्केट स्टडी कुछ मिलेगी नहीं आपके पास में. देयर इज इवन पॉसिबिलिटी दैट यू मे नॉट हैव एनी एक्सपर्ट आल्सो. तो क्या करोगे? यू गो विथ योर gut feeling, your understanding, your preliminary survey. Okay, for example, I would say when we were planning to launch our product in the market, that time what we did was we discussed with some of our friends, colleagues, okay, and some of our existing customers, what do they feel about it, and accordingly we took our call. तो रिस्क तो आपको लेकर के चलना होता है. तो वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट विल हैपन, तो वी ऑलवेज लुक एट द बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो एंड somewhere in between. So you need to identify the different scenarios. Again, it is limited to your thought, limited to the extent to which you are able to visualize future. Okay, so मूवीज आर द बेस्ट थिंग टू लुक एट, क्योंकि उसमें काफी आगे हाई फाई बहुत कुछ दिखता है. फॉर एग्जांपल इन आयरन मैन देखा है वो बंदे का, इसमें सब पूरा कंप्यूटर, कहीं पर कंप्यूटर लैपटॉप मैंने उसको कभी यूज करते हुए देखा नहीं. सब कुछ तो सामने इधर उसको एयर में ही सब कुछ दिखता है. ही कैन जस्ट पिक ड्रॉप, he thinks about it, or he just commands, and that particular type of data is being there in front of him. Now, ये सब कुछ हो कैसे रहा है? So there is a great deal of AI which is being used. आपको पता है उसमें एक आध सीन में even he tries to do a crime investigation. वो एक बंदा काफी हॉट हो, मतलब ऐसा वो अंदर उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता है एंड ही ब्लास्ट. काफी आजू बाजू के काफी लोग ये हो जाते हैं, मर जाते हैं. ह्यूमन बॉम्ब्स की तरह दे वर एक्टिंग लाइक. सो उसमें वो पूरा क्राइम सीन वापस से रिक्रिएट करता है. देखा है वो सब? आर यू एबल टू रिकलेक्ट? यस सर. हाँ, तो ये सब चीजें एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट दे गिव यू अ फूड फॉर थॉट कि हाउ थिंग्स विल happen in the future and to what extent we are actually moving on. We are heading towards it, but still realizing it will take more time. There is one person who I don't know whether you guys are aware of it or not. Pranav Mistry. Okay, Pranav Mistry, he has worked on sixth sense technology. ओके, कभी गूगल में सर्च मारिएगा सिक्स्थ सेंस टेक्नोलॉजी, प्रणव मिस्त्री. ये एमईटी
में उसने बंदे ने प्रोजेक्ट किया था, एंड दिस वाज अ लॉन्ग बैक प्रोजेक्ट. मतलब when he started doing his project, that time we used to use those roller mouses. माउस होते थे, उसमें अंदर बॉल होती थी. ओके, तो वो वाले माउस यूज किए जाते थे. वो उस टाइम का उसने ही स्टार्टेड डूइंग दोस प्रोजेक्ट्स. सो यू कैन इमेजिन उसने क्या क्या चीजें उस वक्त किया था जो हम अभी आज की डेट में is actually getting converted in the form of Google Lens. ठीक है. सो एक बार जब कभी आपको, इफ यू कैन जस्ट नोट डाउन प्रणव मिस्त्री. ओके, तो देखिएगा उसने बंदे ने काफी चीजें उस वक्त विजुअलाइज करके किया है. आज की डेट में गूगल लेंस में आप कोई भी ऑब्जेक्ट भी आप देखते हो, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्कैन दैट ऑब्जेक्ट और टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड सिमिलर थिंग्स डू कम अप. So now, when we look at decision making, so there are two broad conditions that we can talk about. One is decision making under certainty. That means information is available with you. Second is decision making under uncertainty. So दोनों इसमें when we talk about uncertainty, we have some information, but some information is not there. Okay, so partially. And the third is decision making under नो इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स कुछ भी नहीं पता है, एकदम से ब्लैंक. ठीक है. सो व्हाट वी डू इन दीज केसेस, इन बोथ द केसेस, इज first you identify what would be your decision variables. Second step is to identify the possible states or situations or outcomes that may occur. Third is work out your payoffs under all possible scenarios. And then fourth is take a decision. Now, how do you take your decision? Based on your personality. आप में से कुछ लोग हैं क्या जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू किए? Is there anybody? Yes, sir. कोई भी नहीं. आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंस लेने वाले हैं? As a specialization? तीन ही लोग हैं. गुड, नंबर्स बढ़ रहे हैं. अच्छा, बाकी लोग फाइनेंस नहीं लेने वाले हैं जो लोगों ने हाथ नहीं ऊपर किया है. ये तो काफी कम नंबर्स दिख रहे हैं. 15 लोग, 17, 18, 19, 19, that's it. ठीक है. सो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का टेस्ट लेना जरूरी है, बट यही है. ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड्स. थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का टेस्ट लेना जरूरी है, उसको चीजों को समझना जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रेटेजाइजिंग. दूसरा, it's not always necessary that you should be investing, then only you will come to know. You can also do virtual investment and keep a track of it, and that will also help you in terms of अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है. ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पैसे खुद के पैसे डालिए, बट वर्चुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. मतलब एक आध आइडेंटिफाई कर लो, ये देखो कि मैं ये लेकर के चल रहा हूँ, और देखो कि आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है. ठीक है. और उसमें लिमिट करो, अपना बजट रखो और उस हिसाब से वर्क कराओ.
Okay, so आपको मालूम पड़ेगा कि अब why am I talking about this is this talks about personality. कुछ लोग conservatively decision लेंगे, कुछ optimistically लेंगे, कुछ लोग काफी balanced तरीके से चलेंगे. अभी balanced में भी again they may be more towards optimistic or more towards pessimistic, depends. Okay, so what we will do is we'll also look at optimistic decision making, pessimistic decision making, equally likely, that is balanced, ये एकदम से नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि कोई भी आदमी कंप्लीटली एकदम से न्यूट्रल नहीं होता है. एंड यू कैन से balanced with some personality of optimistic or pessimistic, क्योंकि हर एक आदमी टू सम डिग्री ऑप्टिमिस्टिक होता है, टू सम डिग्री पेसिमिस्टिक भी होता है. Okay, so these are certain things which we are going to look at, and this is nothing but actually Harvey's criteria. This is actually, we call it as Laplace. Okay, so we will see all those, and उसका explanation आप लोगों को already वो जो sheet मैंने जो share किया है, okay, this has been developed by Devki madam, so उन्होंने काफी अच्छे से इसमें एक एक explanation सब कुछ डाला है. So I would say कि please read the text at least once. Okay, थर्ड मैं इधर पर लिखना भूल गया, that is decision under risk. Based on different risk आप किस हिसाब से क्या decision लोगे. ठीक है, so fine. Are we clear up to this background? Yes, sir. Take up the first question. Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके हिसाब से विल स्टार्ट वर्किंग अराउंड. फर्स्ट क्वेश्चन, I'll just read it out for all. या फिर हम उधर पर ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं. Just pasted it so that we are able to take advantage of it. This state of nature is basically about so state of nature is nothing but
three possible scenarios: strong market, fair market, and a poor market. Let us go through the question first. Today's electronics specializes in manufacturing modern electronic component. It also builds the equipment that produces the components. Phyllis Wemberger, who is responsible for advising the president of today's electronics on electronic manufacturing equipment, has developed the following table concerning the proposed facility. If we go for large facility, okay, so क्या payoffs हो सकते हैं? This is called as a payoff matrix. Payoff means under what scenario how much would be your payoff, मतलब कितना returns आ सकता है. Okay, so he has talked about profits. He has used some tools, some research. Based on that, he has forecasted certain values. If we don't go for setting up a new facility, so कुछ भी होने दो, strong market रहे, fair market रहे, poor market रहे, it is not going to fetch any additional profits for us. If we go for a small facility and we have a strong market, small facility का definitely capacity भी कम रहेगा. So आपका उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग होने वाला है. फाइन. सो आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है बेस्ड ऑन इफ वी आर सेटिंग अप लार्ज फैसिलिटी अंडर स्ट्रॉन्ग मार्केट, सो प्रॉफिट्स वुड बी $550,000. If it's a normal market, fair market, so 110,000. Poor market, so there is a possibility that you may lose money. Similarly, for medium sized, small facility, and one decision could be not to set up any facility. Okay, so if we are not setting up any facility, we are not investing anything, so no profit, no loss. Fine. Now, what is the optimistic or maximax decision? What is the pessimistic decision? What is the Laplace or equally likely decision? And we'll also take Harvey's, wherein we say alpha value equals to 0.8. When you look at Harvey's alpha value, it is nothing but a coefficient which defines the factor in terms of optimistic versus pessimistic. Okay, so it actually says alpha is defined as coefficient of realism. That means degree of optimism of the decision maker. So if the degree of optimism is 1, so that means the person is highly optimistic, and if it is 0, so the person is highly pessimistic. That is how it will be looked at. So should I write it here? Something weird is happening. Yes, sir. It's not taking up. Okay. So I'm just writing it out for you. Alpha equals to 1 means highly optimistic, and alpha equals to 0 means
and alpha equals to 0.8 will mean it is, just a second. Sorry about the background noise. Are we clear up to this? Alpha equals to 0.8 means it would be 80% optimistic and 20% pessimistic, like this. Okay, so these are the different scenarios under which we are going to check. Okay, so let us start working it out. So all I need is this table first. Okay, this states of nature is for all. So you have got 3 states of nature, that is strong market, fair market, poor market, and your decision variable is whether I should set up a large facility, medium facility, a small facility, or I should not set up any facility. Now, we'll start with highly optimistic criteria. That is the first question. What is the optimistic or maximax decision? From the name itself, you can make out maximax means maximum of for all the decisions. Okay, और उसमें से maximum हम लेंगे. So that means we'll say optimistic payoffs. ठीक है, so optimistic conditions में your payoffs would be क्या होगा? It is maximax. That is what it says, right? So maximum of the first decision. So if I go for a large facility, so under optimistic condition, I will be able to, if everything goes off well, that means the market would be strong. So maximum that I will be able to earn out of all the 3 states, all the 3 conditions, all the 3 scenarios. So maximum of all the 3 scenarios. So it would be 5,50,000, correct? Maximum of all the 3. Similarly, you will do it for maximum of medium-sized facility. So when we look at this, maximum is again under the same condition. So strong market. Okay. Similarly, we will do it for small facility. So here we are getting 2 lakh as the maximum value. And in this also, it would be 0 under all the conditions. So maximus decision. Okay. Under maximus max condition, your decision would be maximum of all the 3 possible states. So it says 5,50,000. 5,50,000 corresponds to large facility. So my decision would be to go in for a large facility. Are we clear up to this? Yes, sir. Now, let us look at a pessimistic condition, and in that our pessimistic payoffs.
So pessimistic में क्या है? Pessimistic is maximum of minimum. Pessimistic में आप हमेशा ये सोचोगे worst case scenario क्या मिलेगा. Okay, so maximum of the minimum payoffs. So it would be minimum of, क्या हो गया? Yes, sir. So it would be equals to minimum of all the three possible situations. So we'll do it for all, and you will calculate maximum of. So means in any pessimistic situation, हम लोग को minimum निकालने का ना सर? हाँ, optimistic में maximum, pessimistic में minimum. And sir, in below in decision maximum. For Sorry? pessimistic also. For optimistic Or, maximum, for pessimistic minimum. Okay. Just optimistic मतलब कि maximum and pessimistic मतलब कि minimum. ठीक है? और even with this also you can make out. Maxi-max means maximum of the maximum, and maxi-min means maximum of the minimum. Okay, so this maximum of all the payoffs, minimum payoffs. So maximum of all the minimum payoffs is 0. So this says your decision would be to no facility. That means no facility should be set up. Clear? Now let us look at Yes. the third criteria. Third criteria is your equally likely. That means also called as Laplace approach. So equally likely में हम क्या करेंगे? We'll find out the average of all. So equally likely just a second. Equally likely, which is also called as Laplace criteria. Okay, so उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि सब एक जैसे ही होगा. So that means we talk about average condition. So what we'll do is equals to average of all the three. मतलब तीनों भी हो सकता है. So in that case, we'll work out for all the three, and you will take the maximum of all the three, all the four payoffs. So इसमें से maximum is 116. So maximum of all the payoffs. Clear? So you'll take average value. यहाँ तक okay है? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now the next is Harvey's criteria.
So in this case, it depends upon the value of alpha, that is degree of realism. कितना optimistic है, कितना pessimistic है, क्योंकि एकदम से completely optimistic, completely pessimistic वो हिसाब नहीं होता है. So what we'll do is, it has been given as 0.8. So here we will say पहले alpha को डाल दो ना, so that alpha equals to, अभी उसको देखेंगे क्या आएगा. I am using a concatenate function so that वो अच्छा दिखे. अच्छा, equals to, sorry, concatenate का spelling गड़बड़ हो गया. Concatenate alpha equals to this plus this. इसे close. So मैं यहाँ पर जो भी values है सिर्फ वो change करूँगा तो इधर पर alpha equals to वो value भी change हो जाएगी. Okay, so this is how I am going to work it out. So when I look at it that way, so हम क्या करेंगे? We'll give some weightage to optimism and some weightage for pessimism. ठीक है? So हम अगर 0.8 बोल रहे हैं, so that means 80% optimistic and 20% pessimistic. So what we'll do is equals to 0.8 into maximum of optimistic में हम maximum of ये लेते थे. So 0.8 into maximum of this plus सर वो जो बाकी का जो अल्फा है वो वैल्यू है pessimistic. वो क्वेश्चन में दिया रहता है ना. हाँ, ये आपको अल्फा वैल्यू दिया जाएगा. इन केस नहीं दिया तो आप एज्यूम कर सकते हो. into 1 minus, सर हाउ टू Your- अज्यूम इट. अगर कुछ नहीं होगा तो आप इसको अगर 50-50% भी लेकर के चलोगे तो भी कर सकते हो. बट उसमें देन यू विल लैंड अप एट लैपलास ओनली. आई विल शो यू. इसी के लिए मैं जानबूझ के ये सब लेकर के कर रहा हूँ. मैंने उसको वेरिएबल की तरह रखा है. सो 20% मिनिमम ऑफ ऑल द थ्री. ठीक है? सो मैं अगर इस हिसाब से चलूंगा, लेट मी जस्ट फ्रीज इट सो दैट आई कैन ड्रैग इट लेटर. सो अब ये देखिए, यही अगर मेरा 0.8 की जगह 0.5 होता, विच इज 50%. सो वी आर मोर क्लोज टू इक्वली लाइकली. बट सिंस इट इज 0.8, so that means more of optimistic and less of pessimistic. तो आप देखिए value is in between the two and more towards optimistic. ठीक है? यही अगर pessimistic होता 0.2, तो ये देखिए it would have been more closer to pessimistic. Fine? यही अगर 0 हो जाए, ये देखिए it is completely pessimistic. यही completely 1 हो जाए, so it is completely optimistic. Clear? Concept Yes, समझा? So it is given as 0.8. So in that case, I will just work out for all. अभी एक्सेल में करने का फायदा ये है कि आप एक बार फॉर्मूला सेट कर दिए, so you don't need to repeat the calculations. Calculations are done by Excel. तो वो एक फायदा है. Okay. So in this particular case, I will just repeat the calculation again. 0.8, it would be like this, equals to 0.8 into maximum of all the three, that is 550, 110, 310. तो एक maximum would be 550. So एक तरह से देखा जाए तो it is into 550, एक zero कम, minus
minus नहीं, sorry, plus. It would be plus 0.2 into pessimistic is minus 310. So minus 310. ठीक है? So this is the kind of calculation. Manually करने जाओगे तो it will take a longer time, and if you use formulas, so फटाफट हो जाएगा. Is the logic clear to us, to everybody? Sir, Sir. can you please show the formula of concatenate which we had used? Concatenate मैं सिर्फ representation के लिए use किया हूँ, but still I will show you. ठीक है? वो presentation कैसे आप अच्छा दिखा सकते हो ना? क्योंकि हमेशा सिर्फ ये नहीं रहता है कि आप काम अच्छा करते हो, काम अच्छे से प्रेजेंट करना भी जरूरी है. तो जैसे मार्केटिंग वाले लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आर आवर कस्टमर्स, तो मुझे भी अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट, बट आई डोंट बिलीव दैट स्टूडेंट्स आर माय कस्टमर्स. I look at it like this: they are my responsibility. Whatever way they perform is my responsibility. अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो due credits to them, but अगर वो बुरा कर रहे हैं then the credit comes to me कि मैं उनके ऊपर बराबर से काम नहीं कर पाया. So मुझे भी अच्छे से करना जरूरी है. So I cannot expect something from you when I myself am not able to do it. Fine? Are we clear with this? ये मैंने इसलिए यूज किया था ताकि मैं इधर पर वैल्यूज चेंज कर सकूं और यहाँ पर भी सब कुछ चेंजेस के साथ में दिखे. So again we will take maximum of, so I can just use this same formula. So formatting वगैरह सब कुछ आ जाता है. Maximum of all the payoffs. So it says 378. So again this also says that large facility should be the option. Clear? Yes, sir. So we have already done up to A, B, C and D. So ये आपका A था. What is the optimistic decision? What is the pessimistic decision? What is the Laplace, which is also called as equally likely decision, wherein we look at the average. Okay. यहाँ पर what is the Hurwitz criteria when of realism decision using an alpha value of 0.8? That means 80% optimistic and 20% pessimistic. And develop an opportunity loss table. तो इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मिनिमैक्स रिग्रेट डिसीजन. सो यू विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज योर रिग्रेट. सो पहले हम रिग्रेट टेबल बनाना कैसे करते हैं वो देखेंगे. आई बिलीव आप सब लोगों को रिग्रेट टेबल बनाना आता है. डू यू रिमेंबर इट? We did it in assignment as well as transportation problems. Did we do that? Do you remember? No, sir. Do you remember making opportunity loss matrix? Yes, sir. Yes, sir. That itself is regret table. Got it. So now if I have to make my regret table, so वो कैसे करेंगे? पहले मैं फॉर्मेट के लिए सब चाहिए तो ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं. And I will just remove the values. अब क्या करेंगे? Regret कैसे कैलकुलेट करेंगे? We'll identify what? The maximum payoff from the above table. So equals to maximum of all the possible payoffs. I'll freeze it minus
that same value minus the cell value. So in this particular case, the regret would be 0. What about here? 550 minus 110. 550 is your maximum payoff. So minus 110. So your regret is 440. What about here? Your regret is 860. तो काफी ज्यादा ही मतलब एक तरह से नुकसान जैसे दिखेगा. If we look at what is the maximum that I could have earned. Okay, so यही सेम फॉर्मूला आप इन सब जगहों पर डालोगे. एंड अभी मैं जानबूझ के उसको वैसे करके नहीं डाल रहा हूं और मैं सिर्फ ये यूज करूंगा फॉर्मूलाज. सो मेरा फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाते हैं. देखिए यहाँ पर सब जगह पर आपको 550 आया है. सो योर मैक्सिमम रिग्रेट इन दिस केस वुड बी 550. अब रिग्रेट में आप हमेशा क्या करते हो? यू विल ट्राई टू मिनिमाइज योर रिग्रेट, बट उसमें भी हम इसमें ये देखेंगे कि मैक्सिमम आप इधर पर कितना कर सकते थे. सो लेट अस इक्वल्स टू मैक्सिमम रिग्रेट आपका कितना हो सकता था यहाँ पर का? इट वाज 860. व्हाट अबाउट अदर एरियाज? in this particular case 650, in this particular case 582, and in this 550. And you will minimize your regret. So this will always be minimax. Okay, so maximum ka minimum value. Regret is always minimized. So minimized के हिसाब से you will get it as your decision would be 550. So 550 means हम इसकी बात कर रहे हैं. So your decision would be to have no facility. यहाँ तक ओके है? Yes, sir. तो आपका ये जो लास्ट दो पार्ट है E and F, develop an opportunity loss table, and then what is the minimax regret decision. So minimax regret decision is to have no facility. Okay. अब अगर प्रैक्टिकली मुझे अगर डिसीजन लेना हो तो मैं क्या करूंगा? ज्यादातर डिफरेंट मेथड से जो मेरे को ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रेफरेबल वुड बी टू गो फॉर अ लार्ज फैसिलिटी. बट देन फिर मेरा रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है. सो प्रैक्टिकली पीपल विल go for somewhere in between. So they will go for a medium facility. Okay, मीडियम फैसिलिटी में आपका इतने तक का पे ऑफ का पॉसिबिलिटी रहेगा. ओके, एंड हम इसमें फिर क्या करते हैं? वी कीप अ प्रोविजन फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑल्सो. सो इन केस इफ टुमारो द डिमांड गोज अप, so I should be able to scale it on the higher side. So flexibility becomes the key. Are we okay up to this? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. So with that, we are through with our first question. Can you please have a look at the second one? क्या लगता है आपको देख के? It is just a repeat of the first one, but with different situation. Correct, na? Will you be able to do it on your own? Yes, sir.
We'll try. इसमें टाइम नहीं डालेंगे. I would request you to please practice it on your own. सिर्फ वैल्यूज चेंज करते जाना है, सारा का सारा काम हो जाएगा. हाँ, बट डोंट यूज द सेम टेम्पलेट. अपने लॉजिक, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेवलप करना. ठीक है. मेरा टेम्पलेट काफी अच्छा दिखेगा क्योंकि ओवर द पीरियड आई हैव डेवलप्ड इट. बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपना थॉट प्रोसेस के हिसाब से डेवलप करना शुरू करो. हाँ, Yes. जैसे आपको कंफर्टेबल होगा, जो आप बेस्ट कर सकोगे उस तरह से कीजिए. फाइन. लेट अस लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. which is again a repeat. ये तीनों क्वेश्चंस में आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है. ओके, वी विल लुक एट what if the payoff matrix is not given but some other information is available. So how do we develop that payoff matrix? So क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखिए. आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो वी विल मूव ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4. एंड बिफोर वी क्लोज टुडे, एटलीस्ट आई एम थिंकिंग कि हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लें. Question number 3, you guys are comfortable? So it's full similar, na, like question number 1 and 2. It's exactly same. सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो वर्डिंग्स और वैल्यूज चेंज हैं. ठीक है. Yes, sir, we'll try out. Yes, sorry. Yes, sir, we'll try out it हाँ, later. कोशिश कीजिएगा. इन केस इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी तो हम लोग जब अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा दैट टाइम वी विल टेक इट अप. बट वहां पर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल मी कि यार इधर पे प्रॉब्लम है. ओके. Yes, sir. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. ये थोड़ा सा अलग है, so I would like to do this. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So the information available with us is Hindustan Sales Corporation is a dealer firm in white goods. It finds that the weekly holding cost per unit of an air cooler is rupees 30. This is the holding cost, okay, per week. Non-availability of an air cooler results in losing a customer. The cost of losing a customer is rupees 80. The expected weekly demand is from 0 to 3 units per week. Construct the payoff matrix and find the optimal
quantity to be stored under maximum criteria. So, अभी इसमें हमारा डिसीजन वेरिएबल्स क्या रहेगा? How much to stock? Correct. My decision variable would be to how much to stock. Correct. And my demand is varying from 0 to 3 units. So that means I can either stock stock 0 units, 1 unit, 2 units, or 3 units. Correct. This will be my decision variable. Hello. Yes, sir. Yes, sir. बोलता नहीं है, मैं दुखी हो जाता हूँ जब कोई कुछ नहीं बोलता तो. So my scenarios could be in terms of decision. So my scenarios would be demand. Scenarios क्या रहेगा? Demand. Now demand क्या हो सकता है? Demand could be for 0 unit, 1 unit, 2 units, or a maximum 3 units. Correct? बराबर है? So Yes, sir. तो मैं 0 डाल रहा हूँ, 1, 2 and 3. These are my weekly demand. बराबर ना? पर वीक बोला है ना उसने? So my weekly demand could be for 0, 1 or 2 or 3 units. What about my decision variable? Decision variable would be to stock either 0 unit, 1 unit, 2 unit or 3 units. देख लो ज्यादातर सब एक ही जैसे आ रहा है. जो आपका डिसीजन वेरिएबल है उसी के जैसे आपका इवन स्टॉक ये भी आ रहा है. राइट. लेट अस सी. अब इसमें पे ऑफ कैसे वर्कआउट करेंगे? तो उसके लिए रूल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं. सो इफ माय डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इफ माय डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो क्या होगा? उसके पहले कुछ चीजें और इधर डालना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट और लॉस. करेक्ट ना? होल्डिंग cost of a cooler is 30 rupees per unit. Opportunity loss is equal to 80 rupees. ऐसे ही लिख देते हैं ना, रुपीज पर यूनिट. करेक्ट ना? इतना इंफॉर्मेशन इतना ही दिया है ना इंफॉर्मेशन? Yes, sir, इतना ही है.
इतना ही दिया हुआ है. सो अभी उस हिसाब से विल जस्ट वर्क आउट. मैक्सिमम डिमांड इज गिवन एज 3, तो हमने उस हिसाब से किया है. अब if my demand is more than the supply, so I will be able to sell whatever is there in the stock. Correct, na? Supply means stock. Demand is more than the stock. तो मैं कितना सेल कर पाऊंगा? And what would be my payoff? मेरा मतलब खर्चा कितना आएगा? जितना मैं स्टॉक कर रहा हूँ, करेक्ट ना? My cost will be equal to how much? My stock into 30 rupees. जितना स्टॉक है, Yes, sir, 30 है. correct? 30. Now, if I say if demand is equal to supply, still my cost would be the same. Supply या demand दो में से कोई भी वैल्यू ले लो, जितना स्टॉक है उतना ही मैं सेल कर पाऊंगा, करेक्ट? बट if my demand is less than the supply, this is where the problem comes. If my demand is less than the supply, then my cost will be equal to how much? जितना मैं स्टॉक कर रहा हूं उसके पैसे तो लगेंगे ही, करेक्ट ना? Yes, sir. सो जितना मैं स्टॉक करूंगा उसके तो पैसे मुझे लगेंगे. अब इसमें एक और चीज हो जाता है, जितना मैं या फिर इसको मैं ये बोलूं, जितना अभी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, माई डिमांड इज लेस देन द सप्लाई. सो जितना मैंने लाया था, स्टॉक जो किया था, उसमें से जितने हाँ, एक चीज हमने इधर पर ऊपर में मिस की है. बिफोर आई डू दिस, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट. व्हेन माय डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, तो आपका सप्लाई जो स्टॉक जो है उसका कॉस्ट माइनस द अपॉर्चुनिटी लॉस. हमने अपॉर्चुनिटी लॉस को तो लिया ही नहीं इधर पर. अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होगी? अपॉर्चुनिटी लॉस वुड बी डी माइनस एस. अगर मान लो मैंने मेरा डिमांड मान लो 3 यूनिट के लिए था और मैंने सिर्फ एक ही यूनिट स्टॉक किया था, तो 1 यूनिट का मेरे को 30 रुपए लगेगा. पर जो बाकी के जो 2 यूनिट का डिमांड आया और मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसके 80 रुपए लगेंगे, 160 रुपए. यस नो? Sir, didn't understood this. हाँ, है ना? तो Sir, ये वाला this would part. be- हाँ, मैं वापस से बोलता हूँ. देखिए, आप एग्जांपल लेते हैं हम लोग. मान लो मेरा डिमांड इज इक्वल टू फॉर 3 यूनिट्स and my supply is, या stock is for say for 2 units. ठीक है? सो ये 2 यूनिट जो हैं, वो 2 यूनिट तो श्योर शॉट बिक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर कोई कस्टमर आता है 3rd यूनिट के लिए, जब आएगा तब मेरे पास में मटेरियल नहीं है. सो देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर 1 यूनिट. सो दैट मींस ये जो 2 यूनिट मैंने रखा, इसका मुझे कॉस्ट मिलेगा, कॉस्ट रहेगा 2 into 30 बराबर है. और जो मेरा 1 यूनिट जो रह गया, जिसका कि मेरे पास में मटेरियल नहीं है, सो 1 into 80 का नुकसान. सो एक्चुअली में देखा जाए तो मेरा 20 रुपए लॉस ही हुआ. अब इसका मतलब और कुछ नहीं, दिस इज योर स्टॉक into 30 minus difference between your demand and supply, that is 1, which is your opportunity loss,
into 80. इसको थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं. If I write it like this, इसको पूरा मैं लिखता हूं. Stock into my holding cost minus demand minus stock into opportunity loss. बराबर है. ये भी याद रहेगा बराबर. Is it fine? Yes, sir. And if demand is equal to stock, तो stock जो भी है into 30, that would be your holding cost. And if your demand is less than the stock, okay, so अभी इसमें आपको कुछ भी ये नहीं दिया है. Unsold उसमें क्या होगा? Unsold उसमें आपके 30 रुपए तो जो लगने हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे. So that means my cost will be equal to stock into 30. तो जितना भी मैं स्टॉक लेके बैठूंगा उसके 30 रुपए हर वीक के मेरे को लगते चले जाएंगे. तो अभी इसको ही हम लोग इधर पर रूल्स में कन्वर्ट करेंगे. सॉरी, अपना टाइम खत्म हो गया ना. तो आप लोग खुद Yes. से ट्राई करोगे ये चीज. Yes. यहाँ पर रूल्स में आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हो. ठीक है, मैं ये शीट आप लोगों को अभी अपलोड कर दूंगा. Just a moment, let me Awesome. download. Thank you. टाइम का हो जाता है ना तो प्लीज मुझे बोल दिया करो, क्योंकि अननेसेसरली आप लोगों के लिए तकलीफ. इसके बाद में आपका कोई दूसरा क्लास रहेगा तो यू विल लैंड अप इन ट्रबल. आप लोगों का कुछ दूसरा क्लास है अभी या फिर मैं इसको कंप्लीट कर दूं? और कुछ नहीं बोला मतलब. दूसरा क्लास हाँ, नहीं है, बट सर विल ट्राई इट सर Sir, can you Monday. just show Yes. us how to Sir, formulate? can do it in the next class. सॉरी. किसी ने कुछ बोला था ना, मैं सुन नहीं पाया बराबर से. कैन यू प्लीज कम अप अगेन? सर लाइक विल ट्राई इट ऑन आवर ओन. अगर नहीं समझा तो ठीक है, ask ठीक me. है. यही रूल को आप इफ कंडीशन के फॉर्म में आपको करना पड़ेगा.